Good morning, student. How are you? Hope you are doing well over there. So, the next part of stress and its management, we are going to discuss the second part of stress and its management. अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि स्ट्रेस होता क्या है, ओके, एक्चुअली होता क्या है, देन व्हाई स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, देन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जैसे एक्यूट, एपिसोडिक एंड क्रोनिक. ओके, एक्यूट टेम्पररी रिएक्शन होता है. ओके, एपिसोडिक क्या होता है? एपिसोडिक स्ट्रेस जब हम फ्रिक्वेंटली स्ट्रेस रहते हैं तो उसका जो एक्यूट स्ट्रेस होता है, उसका जो टेम्पररी स्ट्रेस होता है, उसका कन्वर्जन एपिसोडिक स्ट्रेस में हो जाता है. क्रोनिक मीन्स कंसिस्टेंट. ओके, ओके, कंसिस्टेंटली जब हम एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में होते हैं तो उसे कहा जाता है लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस. देन इट कॉल्ड एज क्रोनिक and which is very harmful, dangerous. So now we are going to discuss the sources of stress. Okay, actually stress हमें या हमारे बॉडी को पता कैसे चलता है? okay, बॉडी रिएक्ट क्यों होती है, बॉडी ट्रिगर होती है ना, ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन, when we face it or when we tackle it, बॉडी ट्रिगर होती है. तो ये ट्रिगर कब होती है? तो कुछ ना कुछ सोर्सेस रहते होंगे. ओके, सोर्सेस है. सो सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, एक्चुअली स्ट्रेस हमें आता कहाँ से है? ओके, वो फॉर्म कैसे होता है? मेंटली एंड फिजिकली बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है. तो सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस इसे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन वी नो द सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस वी कैन इजीली मैनेज इट. ओके, easily means we know the question and now we will answer it in a very simple way. But when we don't know the question, how we can answer it? So first it is very important to identify the sources of stress. Stress आता कहाँ से? तभी हम उसे मैनेज कर पाएंगे. ओके, उसे फेस कर पाएंगे या उसे टैकल कर पाएंगे. सो sources of stress. Sources of stress are of two type, external and internal sources. Okay, external sources होते हैं, internal sources होते हैं. जैसे family problem, marital issues, conflict with loved ones, pressure to perform, career instability, long hours और contribute to form stress. Okay, ये कुछ टर्म है. जैसे फैमिली में प्रॉब्लम होता है, डिस्प्यूट होता है, मैरिज का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, करियर में परफॉर्मेंस का इशू होता है. ओके, कभी कभी एक्स्ट्रा आवर्स में काम करना, उससे भी स्ट्रेस आता है, उससे बॉडी पे टेंशन आता है. ओके, बिकॉज बॉडी परस्यू इट्स एज ए चैलेंजिंग और थ्रेटनिंग सिचुएशन. फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, डेट, ओके, कर्जा बढ़ जाता है, जॉब नहीं रहता है या जॉब चले जाता है. ओके, lack of support, okay, emotional support, financial support. When we don't get emotional and financial support from our close one, then it contribute to stress. Tension आ जाता है. So these are some of the important external sources of stress. Now internal sources of stress. Okay, habit of overthinking. जब भी हमें overthinking की habit होती है, we think, we don't think in in a restricted way, we think in imaginary way. Overthinking. Overthinking is a mental state of mind. Okay, so it's a habit. When we think too much, what is going to happen, or how will I tackle this, or if I don't do such thing, okay, what will happen? So we think in a very imaginary way, in a very illusion. ओके, सो ये क्या होता है? एक हैबिट होती है ओवर थिंकिंग का. वी थिंक टू मच, देन वरी,
ये भी एक हैबिट होती है, जस्ट थिंकिंग विदाउट टेकिंग एनी एक्शन. You just think without any execution, then it form a tension. Negative self talk, negative self talk इंटरनल होता है. We don't respect, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है. अपना जो टॉक होता है वो निगेटिव टॉक बन जाता है, टर्न हो जाता है. सो ये भी एक स्ट्रेस का सोर्सेस हो सकता है. सॉरी है. बीइंग वेरी अनरियलिस्टिक अबाउट लाइफ. ओके, अनरियलिस्टिक. सो इमेजिनरी लाइफ में हम रहते हैं या अपना टारगेट सेट करते हैं. जो हो नहीं सकता उसे हम इमेजिन करते हैं. ओके, वी आर नॉट रियलिस्टिक अबाउट लाइफ. ओके, वी जस्ट we just live in imaginary. Okay, we just think, we don't take any action. That's why it form a tension. When we compare with others, with other life, then it also can contribute to stress and anxiety. Not saying no, an unexpressed thought and need can make you feel burnout and stress. Okay, जब हम when we can't say no to such thing that going to waste your time. Okay, जो तो आपके प्रायोरिटीज को मैच नहीं करते हैं. ओके, ऐसे when we don't set boundaries, तो इससे भी स्ट्रेस बढ़ता है. when we can't express ourselves, our need, so we feel burnout, emotionally burnout. इससे भी स्ट्रेस बढ़ता है. wasting time doing nothing without worrying about future, try to control uncertainty can trigger to stress. टाइम वेस्ट करना, schedule नहीं रहना, we don't implement anything, just thinking too much, we try to control unrealistic thing, we try to control others, we try to control other behavior which is not in our control. So such are the internal sources of stress. So it is very important to identify the sources of stress and try to manage it. Now impact of stress, उसका impact क्या होता है. ओके, ये पढ़ने वाले कि एक्चुअली स्ट्रेस का इम्पैक्ट मेंटली, फिजिकली क्या होता है, साइकोलॉजिकली. ओके, सो स्ट्रेस कैन contribute to wide range of physical, psychological and behavior problems. So स्ट्रेस का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं, वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली और बिहेवियर पे होता है. प्रॉब्लम्स आते हैं, कंट्रीब्यूट होते हैं. फिजिकल प्रॉब्लम मीन्स हेल्थ कंडीशन, फिजिकल हेल्थ कंडीशन. ओके, जो हमारा फिजिकल हेल्थ फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. ओके, जो नॉर्मल फिजिकल कंडीशन होती है बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाती है. ओके, देन साइकोलॉजिकल मीन्स हमारा माइंड. ओके, इट्स इमोशन एंड बिहेवियर प्रॉब्लम मीन्स अ पैटर्न ऑफ एक्शन. जैसे सोसाइटी में हमारा बिहेवियर होता है, ओके, उस पर भी इम्पैक्ट, उस पर भी निगेटिव इम्पैक्ट गिरता है. ओके, next, now we are going to discuss physical problem caused by stress. Physical problem means physical state of body, physical condition of a body, उस पे कैसे impact गिरता है. Stress hormones. Okay, stress hormones lead to increase in heart rate, blood pressure, stroke, heart attack and heart disease. Okay, जो serious issues रहते हैं, blood pressure, heart rate या heart attack, heart disease, ये stress contribute करता है. Okay, stress disturb person digestive system. Okay, your because stress impact your physical state, it disturb your sleep pattern, it disturb the normal condition or normal state of your body. So digestive system पे उसका impact गिरता है because it disturb or it has a negative impact on your immunity system. That's why stress disturb person digestive system, causing stomach issue like nausea, irritable bowel syndrome. Okay, these are the disease connected to digestive system.
ओके, स्ट्रेस कैन लीड टू डिस्टर्बेंस इन स्लीप। ओके, आपको कम नींद आती है या ज्यादा नींद आती है। ओके, stress has a very dangerous and negative impact on your physical state of physical state. Then prolonged stress means long lasting stress can damage immunity system. उससे क्या होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक गिर जाएगा और आपका जो फाइटिंग स्पिरिट है या जो फाइटिंग टेंडेंसी है वो वीक होती हो जाएंगी, एंड देन which bring chances of infection and illness. Okay, these are the physical problem caused by stress. Then psychological problem. Psychological means mind, means it can affect concentration, memory and decision making ability. Okay, focus नहीं रहता, अनफोकस हो जाता है आदमी. Okay, so ये psychological impact start होता है, negative impact. Long lasting stress may turn individual to alcohol, drugs or other. Okay, उसे जब स्ट्रेस लॉन्ग लास्टिंग होता है, देन द पर्सन ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ अल्कोहल ड्रग्स. ओके, बट इट he thinks that taking alcohol or drugs going to tackle or going to eliminate stress, but it is not. In both personal and professional life, stress can lead to burnout, emotionally burnout, decrease in self-respect and reduce work and life satisfaction. इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे होता है, इमोशनली बर्नआउट होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती ही नहीं है, देन वी कांट फोकस ऑन इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, एंड देन our professional life get disturbed and then we don't have any satisfaction about our work. Stress can lead to anger and mood swing. Okay, स्ट्रेस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसे दिखता है, हमें अननेसेसरी गुस्सा आता है. ओके, हमारा मूड स्विंग होता है. ओके, वी कांट फोकस, एंड long lasting stress can increase existing anxiety and depression and contribute to their development. Anxiety and development, anxiety and depression. Okay, it contribute to anxiety and depression. Long lasting stress contribute to anxiety and depression. अननेसेसरी गुस्सा भी आता है, मूड स्विंग भी होता है, अनफोकस हो जाते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, आपको लगता है कि टेकिंग अल्कोहल, ड्रग्स और स्मोकिंग कैन रिड्यूस द impact of stress, but it is not. Actually, it increase stress, it increase anger, it increase mood swing. Actually, smoking, taking alcohol, drugs. Okay, then behavior problem caused by stress. Okay, till now what we have studied, the sources of stress: internal, external, external, internal, then the impact, physical impact of stress, physically, psychologically and behavior. Okay, physically means sleeping pattern disturb होता है, then digestive system disturb होती है, immunity system weak होती है, then psychological impact माइंड पे होता है, जैसे अनफोकस हो जाता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है. Okay, alcohol, drugs, smoking. He takes the help of alcohol, drugs, and smoke to reduce the frequency or frequency of stress, but it is not. Okay, unnecessary aggressive हो जाता है. Okay, उससे गुस्सा आता है, मूड स्विंग हो जाते हैं. So these were the impact, physical impact, psychological impact. Now we are on the third part of uh, impact of stress, that is behavior. Okay, एक्चुअली जब स्ट्रेस का इम्पैक्ट अपने बिहेवियर, ओके, स्वभाव पे कैसे दिखता है. ओके, मीन्स स्वभाव मीन्स हाउ वी कम्युनिकेट और हाउ वी इंटरेक्ट इन सोसाइटी. स्ट्रेस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी. ओके, स्ट्रेस का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पे गिरता है, जैसे फैमिली के साथ जो हमारा कनेक्टिविटी होता है, फ्रेंड्स के साथ एक कनेक्टिविटी होता है, या सोसाइटी में हमारी कनेक्टिविटी होती है, इंटरेक्शन होता है या कम्युनिकेशन होता है, उस पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट गिरता है. ओके, मीन्स
stress has its negative impact on brain means it shrink the prefrontal cortex which contribute to memory and learning, and it enlarge amygdala which contribute to stress response. Okay. एक्चुअली स्ट्रेस का जो निगेटिव इम्पैक्ट हमारा जो ब्रेन, हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो मेमोरी में या सीखने के लिए, नई नई बातें सीखने के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है उस पर इम्पैक्ट गिरता है, और जो स्ट्रेस हार्मोन्स है या स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उस ऑर्गन को वो बढ़ाता है. सो दैट्स व्हाई इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर body physically, psychologically, and behavior wise. So these are the impact of long lasting stress or prolonged stress. So yeah, these were the impact of stress. So means chronic stress. Okay, because chronic stress are very harmful. Okay, so till now हमने स्ट्रेस क्या होता है, then why stress management is important, then stress हार्मोन्स क्या होते हैं, ओके, बॉडी ट्रिगर क्यों होती है, स्ट्रेस एक्चुअली वर्क कैसे करता है, मीन्स एक्चुअली बॉडी डिटेक्ट कैसे करती है कि दिस इज द चैलेंजिंग सिचुएशन और स्ट्रेसफुल सिचुएशन. देन सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस एक्चुअली आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, उसे आइडेंटिफाई कीजिए, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टू reduce the frequency of stress. Then type of stress पढ़े हैं, acute, episodic, chronic. Okay. Then impact of stress. Stress का impact क्या होता है, physically, mentally, psychologically, behavior wise. Then okay, so these were the important topic or subtopic connected to stress. Okay, now we are going to discuss हाउ टू मैनेज इट. अब तक हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रेस होता क्या है, सोर्सेस, उसका इम्पैक्ट. ओके, उसका इम्पैक्ट डेंजरस होता है, ओके, फिजिकली, मेंटली, बिहेवियर वाइज. नाउ वी हैव टू discuss, or we have to know, we should know how to manage it. So now we are going to study how actually we should or we must manage stress. Okay, so we are we are we are going to study in next part of stress management topic. So till then, thank you, bye, take care.